आंसर फॉर दैट मैंने क्लास में बताया था. ओके, so it is not that randomly मैंने बोल दिया तो बोल दिया. You should also be able to validate that point कि अच्छा ये जो point है यहाँ पे valid नहीं है, क्यों valid नहीं है यहाँ पे पता होना चाहिए. Okay, so for the positive half only T1 will be conducting, and when T1 is conducting this will be the current path. So what is that? It will look like this. इस तरीके से कुछ दिखेगा ये. ये मेरा ट्रांजिस्टर वन है, ये मेरा ट्रांसफार्मर है. यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफार्मर का व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ग्राउंड, सॉरी फ्रॉम VCC टू ट्रांसफार्मर टू ट्रांजिस्टर अगेन बैक टू ग्राउंड. एग्जैक्टली उसी तरीके यहाँ पे देखिए. फॉर सपोज इफ दिस इज VCC, करंट डायरेक्शन कैसे फ्लो करेगा? करंट कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम VCC टू ट्रांसफार्मर एंड थ्रू ट्रांजिस्टर अगेन बैक टू ग्राउंड. उसी तरीके से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, इन द ट्रांसफार्मर आपका जो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी है उसमें जो करंट जो फ्लो कर रहा है इनिशियल प्राइमरी में जो करंट जो फ्लो कर रहा है, प्राइमरी में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, राइट, फ्रॉम डाउनवर्ड डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन. आपका जो करंट है इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली द पॉजिटिव हाफ इज गेटिंग इंड्यूस्ड ओवर हियर. क्या आ रहा है आपका यहाँ पे? पॉजिटिव हाफ इज गेटिंग इंड्यूस्ड. Okay, and T2 will be off because negative है तो obvious बात है T2 conduct नहीं करेगा because base emitter junction will be reverse bias, so because of that T2 will not be conducting in the positive half. And what happens in the negative half? See, negative half में क्या होगा? Negative half में what will happen? This will turn out to be positive terminal and this will turn out to be a negative terminal. And what about the current direction? अभी जो current direction है T2 conduct करेगा तो this will be my current direction. This will be my current direction. अभी जो आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना है that is what is the current direction of the primary? Primary में current का direction क्या है? Initially it was from downward to upward direction, from bottom to top. अभी current का direction क्या होगा? Opposite direction में. Yes, opposite direction में nothing but initial this was the flow of current in the positive half and this was the flow of current in the negative half. तो हमें ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्किंग पता है. सो इफ दिस इज द करंट ऑब्वियसली आपको जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इफ दैट इज क्लॉकवाइज हियर ऑब्वियसली यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर इस केस में आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है तो इस केस में डेफिनेटली यू शुड गेट अ नेगेटिव वोल्टेज. सो हेंस व्हाट इज दैट यू गेट अ नेगेटिव हाफ ओवर हियर. You get a negative half over here. Is this clear? So what is that I'm getting? I'm getting a positive half as well as a negative half. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हाफ को मुझे एम्पलीफाई करने के लिए आई एम यूजिंग वन ट्रांजिस्टर. अनलाइक अभी जो हमने प्रीवियस जो हमने क्लास ए देखा था, क्लास ए में एक पूरे साइकिल को एम्पलीफाई करने के लिए आई हैड ओनली वन ट्रांजिस्टर. But here, for the positive half, I have one transistor, and to take care of the negative half, I have the another transistor that is T2. And this is the nature of the waveform that we get on the output side. समझ में आया आप लोगों को? मतलब Hello. Yes, sir. Okay, fine. So that was about the push-pull amplifier जो हमने last class में देख रखा था already. Okay. And I asked you to calculate efficiency. Okay, fine. यहाँ पे आप देख लीजिए. This is the input signal Q1. This will be the half. Q2. This will be the half, and this will be the total output that we get. Now, what about the efficiency? Because that is important. Because एक चीज मैं आपको क्लियरली बताया था, पावर एम्पलीफायर्स में सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास A and क्लास B एम्पलीफायर्स आर कंसीडर्ड टू बी इंपॉर्टेंट as far as the efficiency calculation is concerned. Whereas class C and class AB में textbook में they don't have this derivation, and basically exam में भी they don't ask you because only important amplifiers are class A and class B. ठीक है? अगर आपको ओवरऑल क्वेश्चन मिलता है write a brief detailed notes on power amplifiers, तो वहां पे हम क्लास A, B, C and AB के बारे में क्या क्या चीजें लिखोगे? जो 4 पॉइंट्स बता रहा था उन चारों पॉइंट को एक्सप्लेन करते जाओगे हर चीज में, मतलब हर एम्पलीफायर. बट whereas derivation is concerned efficiency का सिर्फ आपको दो ही एम्पलीफायर्स मिलेगा, that is class A and class B. So this derivation to get this value it will be important. So class B efficiency जो होता है. Okay, कैसे निकालेंगे efficiency बताइए? How do you calculate the efficiency of class B power amplifier? Yes. First, what is the first step that is required here?
What is the first step that is required to calculate the efficiency? AC power and DC power. Okay, fine. AC power and DC power required है. DC power मुझे पता है, VCC into IC होता है. And what about AC power? AC power कैसे निकलेगा बताइए एक बार. See, efficiency जब भी आप calculate करोगे, यहाँ पे आपने देखा होगा, class A में जब हमने efficiency calculate किया था. So what is that I wanted as? What was I wanted this graph. Without this graph, you cannot analyze your efficiency because इस graph से ही आपको VM and IM मिलेगा. And हमको पता है that AC power output will be VM by root 2 and IM by root. That is VM IM by 2. तो फर्स्ट आपको क्या ड्रॉ करना है, इस तरीके का आपको एक ग्राफिकल पैटर्न वहां पे ड्रॉ करना होगा. एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज अ क्लास ए पावर एम्पलीफायर, इसलिए ऑपरेटिंग पॉइंट कहां पर है, सेंटर में. एंड क्लास बी पावर एम्पलीफायर में कहां पर होगा, ऑपरेटिंग पॉइंट विल नॉट बी एट द सेंटर, इट विल बी समझिए दैट इज सेंटर नहीं होगा. ऑपरेटिंग पॉइंट कहां ले करता है, क्लास बी पावर एम्पलीफायर में X axis. Yes, it lies on the x-axis. Very good. So this is my operating point Q. This is my operating point Q. And let me draw this report. Only the positive half. Input I am not drawing. Input up to the input you draw it by yourself. Okay, and what is this axis? This axis is VCE, and this axis is nothing but IC. Okay. Yes. अभी बताइए कैसा निकलेगा इसका efficiency? How do you get the efficiency? Yes, class A का मैंने कैलकुलेट किया था. Now I ask you this, asking for the class B. Efficiency कैसे निकलेगा बताइए? Just from PAC लेते हैं because PDC थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. Let's talk about PAC. AC power input. Product of voltage and current. Yes. यही होता है PAC. Product of voltage and current. PDC भी product of voltage and current होता है. लेकिन जब AC जो होता है यहाँ पे it is RMS voltage and RMS current. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है that it is product of RMS voltage and RMS current. Now what is the RMS value of this current? ये जो current ये जो voltage waveform है DC का जो waveform है, इसका RMS value कितना होगा? What about the RMS value? अच्छा यहाँ से यहाँ तक फॉर सपोज दिस इज 0. यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा बताइए? एट दिस पॉइंट व्हाट विल बी द वोल्टेज? वोल्टेज आपको पता है, व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट? इट इज VCC. दिस इज नॉट VM. दिस इज नथिंग बट IM. RMS वैल्यू कितना होगा इसका बताइए अभी? पीक वैल्यू VM है, VM is equal to VCC, so RMS value will be equal to VCC by root 2. IRMS peak value is IM, so it will be IM by root 2. So this will be equal to VCC into IM by 2. So this is nothing but PAC. PDC कितना होगा? So this is PDC. And this is PAC. Efficiency चाहिए, दोनों का रेशियो निकाल. And if you calculate it, the ratio will be equal to
समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. सब आ गया समझ Yes. में आप लोगों को? ओके फाइन। जिसने भी हम यस सर बोला, बताइए पीडीसी कैसे लिखा है मैंने इसको? हाउ डिड आई गेट दिस 2 by pi into VCC into IM? सर एवरेज लिखा है। नहीं, कैसे आया बताइए, पीडीसी कैसे आया बताइए एक बार। इनिशियल पिछले केसेस में तो सिर्फ हमने क्या लिखा था, क्लास ए में सिर्फ हमने लिखा था पीडीसी इज इक्वल टू VCC into IC। यहाँ पे हमने 2 by pi क्यों लिखा है यहाँ पे? I have it written here 2 by pi. I have it taken here PDC to be 2 by pi. Because mathematical करोगे तो वही मिलेगा 78.5 मिलेगा। कितना आएगा ये? It will be around pi by 4 आएगा। Pi by 4 if you calculate it, it will be around 78.5% in terms of percentage। into हम लोग करेंगे। This time microphone on please off कर दीजिए। यहाँ पे आपको जो PAC जो होगा, पिछला जब हमने क्लास ए पावर एम्पलीफायर में लिखा था, वहां पे का मेन फोकस वाज ऑन टू कैलकुलेट दिस PAC। यहाँ पे PAC डायरेक्टली आ गया है, दैट इज VCC into IR by 3। नाउ द फोकस विल बी ऑन PDC बिकॉज़ PDC जो होगा, ठीक है, PDC जो होगा आपका, अगर आपने क्लास fine. I'm not drawing the entire structure, just आपको roughly बता रहा हूँ, right? So I'm just drawing the rough structure of a push-pull amplifier. This is VCC. यही होता है structure. Now, what is the power delivered by this VCC? What is the power delivered by this VCC? कितना होगा? For suppose this current is I. For suppose this current is I, and this is VC. तो obviously क्या हो जाएगा? The power delivered will be VCC into I. यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Okay. So the power delivered by this VCC will be equal to VCC multiplied by the current that is flowing out of the positive plate of the battery. Okay. Now, what about this value of current I here? What about the value of this current I? तो यहाँ पे आप जब देखोगे पॉजिटिव हाफ में, जब पॉजिटिव हाफ होगा, only P1 will be conducted. Only P1 will be conducted. What about the current? Current will be only this one. This will be, let me draw this current I. Okay. So this is what the current will be. This is what the current will be. Note down transformer में जो current होगा, transformer में जो current जो flow कर रहा है, that is flowing from downward to upward direction. Okay. And now for the negative half, जब negative half होगा, कौन सा current करेगा? P2 conduct करेगा. But still, क्या इस direction में कोई change आ रहा है? Is there any change in the direction of the current that is coming out of VCC? Hello. No, sir. No, there is no change in the direction of the current that is coming out of VCC. But यहाँ पे आपको change दिखेगा in the transformer side. कि initially current upwards था, now the current is going in the downward direction. Accordingly, we get the positive half and the negative half. तो ये जो current है, that is same. That is same over here. ठीक है? Nothing but current का जो direction. Obviously, अगर positive half ये current है, तो even though if you have the negative half, the direction of current remains the same. So hence you will be getting this kind of a pattern. You will be getting this kind of a pattern. तो किसका पैटर्न है ये जो करंट जो फ्लो कर रहा है आई, दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव प्लेट. सो दिस इज अ वेवफॉर्म शेप. किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज द वेवफॉर्म शेप ऑफ द करंट दैट इज फ्लोइंग आउट ऑफ VCC, सो दिस इज व्हाट द वेवफॉर्म शेप विल बी. ओके. एंड फॉर सपोज इफ आई टेक दिस करंट टू बी IM, पीक करंट इज IM. इफ आई टेक दिस पीक करंट टू बी, इसका एवरेज वैल्यू कितना होगा? व्हाट एवर द एवरेज वैल्यू, इट विल बी 2IM by pi. रेक्टिफायर्स में हमने डिस्कस किया था. अगर हमारे पास ऐसा कोई वेवफॉर्म है, ओनली पॉजिटिव हाफ होता है, नेगेटिव हाफ नहीं होता. सो इन दैट केस इट इज IM by pi. आई हैव द पॉजिटिव हाफ एज वेल एज द नेगेटिव हाफ बोथ इन द both above x axis.
So if I calculate the average of this current, so what is that I get is 2 Im by pi. Is that clear? So what is the PDC here? The PDC is equal to VCC into I, and I can average value. So average value will be 2 Im by pi. Is that clear? So this is what my PDC is. Plus, once you have the PDC, and you have the this is PDC and this is PAC. Now what is efficiency? It is PAC by PDC. So if you do that, you will be getting it as efficiency कितना आएगा? Pi by 4 आएगा. Pi by 4 will be equal to 0.785. In terms of percentage, it is 78.5%. Is this clear or not? बता दीजिए मुझे एक बार. Hello. So हमेशा एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप efficiency calculate करते हैं for power amplifier, so what is that is required is you have to draw this graph, because unless and until you have this graph, you cannot calculate, you cannot have the expression for this PAC. ये आपके पास सामने है, इसलिए चलिए VM है, ये IM है, so VM IM by pi. VM किसके बराबर है? VCC के बराबर है. And IM को मैं ऐसे रखता हूँ because in the denominator also we get IM over, so that 2 will get cancelled. So this was about the class B power amplifier. So I have a problem over here. The problem is, suppose, what is the basic definition of an amplifier? The basic definition of an amplifier देखिए आप यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए. Once again. So we have some problem in this class B power amplifier. So we'll see what is that problem that we're facing in class B power amplifier. So this is plus 0.7 volts and this is minus 0.7 volts. And this is nothing but the reference x-axis. Okay. So अभी मुझे बताइए कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है मेरे क्लास बी पावर एम्पलीफायर में. What is the problem that I would experience in class B power amplifier? देखिए अब इसको Yes. अब बताइए प्रॉब्लम क्या आपके हिसाब से? What is the problem that I can encounter in this circuit only? What is the problem that I can face here? Let's बताइए what is the problem that I can face here? Yes, what is the problem that we are facing here? Hello? Class B of the power amplifier, what is the problem that we can have? बाइसिंग की हो सकती है सर. बाइसिंग प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा. ठीक है. यहाँ पर देखिए जब हम पॉजिटिव हाफ दे रहे हैं, पॉजिटिव हाफ हो गई. For the positive half, this will be the polarity, this will be plus, and this will be negative. And in that case,
T1 will be conducting, T1 conduct करना start कर देगा, ठीक है? So इनपुट जो वोल्टेज होगा T1 के लिए, so this is what, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट होगा? जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होते हुए जाएगा आपका इनपुट वोल्टेज फॉर द पॉजिटिव आउटपुट। अब एक बात बताइए, जब इनपुट वोल्टेज 0.1 होगा, क्या मेरा ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करेगा? Yes, sir. Plus 0.7, फिर मैं ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट, हेलो, नथिंग बट यहाँ पे जो Yes. वोल्टेज है, अगर यहाँ पे वोल्टेज है प्लस 0.1 वोल्ट है, क्या मेरा ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट करेगा? No, sir. कंडक्ट नहीं करेगा। कब तक कंडक्ट नहीं करेगा? जब तक ये जो वोल्टेज है कहाँ तक नहीं पहुंच जाता? 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता, 0.7 वोल्ट तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मेरा T1 कंडक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज माय बेस एमिटर जंक्शन। ये मेरा बेस एमिटर जंक्शन, एमिटर ग्राउंडेड है, एमिटर इज ग्राउंडेड, तो बेस का जो मिनिमम पोटेंशियल जो होना चाहिए दैट शुड बी 0.7। जब तक वो 0.7 नहीं आएगा तब तक मेरा ट्रांजिस्टर T1 कंडक्ट नहीं करेगा। पर आइडियली हम क्या कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव हाफ है T1 विल स्टार्ट कंडक्टिंग, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हाफ है तो पॉजिटिव हाफ मुझे आउटपुट साइड मिलने लग जाएगा। बट एक्चुअल रियलिटी इज जब तक इनपुट वोल्टेज 0.7 तक नहीं जाएगा तब तक ये T1 ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं करेगा, एंड सिंपली यू विल बी गेटिंग द जीरो आउटपुट वोल्टेज। सिमिलरली उसी तरीके से नेगेटिव हाफ में भी जब तक ये -0.7 तक रीच नहीं कर जाता T2 भी नहीं कंडक्ट करेगा, and T2 conduct नहीं करेगा तो obvious बात है आउटपुट वोल्टेज will also be equal to 0. So what happens here is we can show it, I show it graphically over here. It is 0. 0 से स्टार्ट कर रहा है, 0 वोल्ट है, 0 से 0.7 तक कब तक नहीं जाएगा? तो एक्चुअली आना कैसे है? अगर एम्पलीफायर क्या करता है, अगर मैंने साइनसॉइडल दिया तो साइनसॉइडल आउटपुट आना चाहिए, राइट? So this is what my ideal requirement is. But practically if I look at the graphs, what is that I get here is, what is the kind of waveform that I have here is like this. इस तरीके का वेवफॉर्म आपको देखने को मिलता है। So what is happening over here? यहाँ पे जो हो रहा है, what is happening over here is, you can see over here, it is nothing but at the zero crossing. यहाँ पे जो zero crossing होता है, तो वहाँ पे मुझे distortion मिलेगा, बाकी सिग्नल्स होगी, but what is happening at the zero crossover, at the zero crossing, what is happening is I am facing some distortion, I'm experiencing some distortion, right? Ideally कैसा होना चाहिए? Ideally I should get a sinusoidal waveform on the output side. But what is the kind of waveform that I am getting is, this is the kind of waveform that I am getting. And this waveform is clearly evident that it has been distorted at the zero crossing. Zero crossing के left and right में देखा जाए तो it is getting distorted over here, right? So this kind of disturbance is called as the crossover distortion. Crossover distortion. And हमें कहाँ देखने को मिलता है ये? हमें ये देखने को मिलता है in class B power amplifiers. In class B power amplifiers only this kind of distortion is evident. Is this clear? समझ में आ रहा है? So what is happening over here is, अगर आप देखेंगे clearly, तो ये जो प्लस 0.7 तक या माइनस 0.7 तक ये जो एरिया है, तो इस रीजन में मुझे जो है डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है. And what is this distortion called as? This distortion is called as the crossover distortion. Why it is called as crossover distortion? The distortion that is happening at the zero crossing is called as the crossover distortion. So this is one of the problems in my class B power amplifiers. Okay, though I say that for the positive half T1 conduct करेगा, negative half T2 conduct करेगा, but for the T1 to conduct, the initial voltage should be more than 0.7. For the T2 to conduct, the voltage should be less than minus 0.7. क्या समझ में आ रहा है आपको? पॉइंट बताइए मुझे एक बार. Yes, sir. Okay, so this is the problem that we see in the class B power amplifier. Class B power amplifier में ये हमको problem देखने को मिलता है. Nothing but the initial biasing voltage is being missing. The initial biasing voltage is missing. Okay, so this is called as a crossover distortion. So to overcome this problem, we will be using a power amplifier, and that power amplifier is nothing but the class AB power amplifier. Is that clear? अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? We have discussed class A power amplifier, class B power amplifier. दोनों का हमने efficiency डिस्कस कर लिया कि class A में 25 and 50 आता है, and class B में it is 78.5. So this is what we have seen. Okay, and we have seen what is called as crossover distortion. We have seen what is called as crossover distortion. That is also clear. And now the question is, okay, this is the problem we are facing in class B power amplifier. Now how to overcome that? For that we have one more amplifier, which is a hybrid of this class A and class B, nothing but class AB power amplifier.
एग्जैक्टली है। तो वो जो एम्पलीफायर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू शुड हैव बिट ऑफ एन आइडिया ऑफ इट कि ट्रांजिस्टर सॉरी एबी जो पावर एम्पलीफायर है वो कैसे काम करता है। So as I told you that it is just I can call it as a hybrid of class A and class B power amplifier. So that amplifier is class AB power amplifier. जो प्रॉब्लम जो मुझे देखने को मिल रहा था, तो प्रॉब्लम दैट आई वाज फेसिंग इन दिस क्लास A power amplifier was distortion zero, no doubt distortion was almost absent, but efficiency was very less. Efficiency was less. Okay. And efficiency is class A and efficiency of class B was more. This is what I have seen. Okay. And if I talk about the distortion, in class A, it is absent. Okay. And if I talk about the distortion in class B, it is more. This is clear. This is more. So what is that I want is I want मुझे ऐसा एक एम्पलीफायर चाहिए जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, और जिसमें डिस्टॉर्शन भी कम हो, लेकिन ये किसमें मिलेगा मुझे? क्लास बी में मिलेगा। एंड डिस्टॉर्शन कम किसमें मिलेगा मुझे? क्लास ए एम्पलीफायर में। सो we are trying to club these two results. We are just trying to have an amplifier which can satisfy these two. Obvious बात है, it cannot be completely absent. Yes, there will be some distortion. And efficiency, obvious बात है, it cannot be 100%. Definitely, efficiency आपकी improve होगी in comparison to my class A. Okay, so we are going to build an amplifier which is a combination. We can which can have the characteristics which is a combination of class A and class B power amplifier. And that amplifier is nothing but my class AB power amplifier. Is this clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'll draw the circuit. Okay. So take it as an assignment. ये जो power amplifier है. Okay. अभी बता रहा हूँ आपको. So your next assignment, एक assignment मैंने दे दिया. So this will be your second assignment. Write a detailed notes on your power amplifier. Power amplifier के बारे में पूरा notes आप submit करें मुझे. So what are the information that you have? ठीक है. Textbooks में class AB और class C के बारे में ज़्यादा दे नहीं रखा. So that is the reason I'm giving this as an assignment. कि आपको थोड़ा सा research करें and see what is that you have for this class AB and class C power amplifiers. No doubt I will give you an idea how this class AB power amplifier works and how class C power amplifier works. But still आपको इसमें थोड़ा सा research करें, देखें class AB and class C together. And after Diwali, you just submit that assignment. Just make a note of it कि यार एक assignment है जो submit करना है on power amplifiers. Starting से जो मैंने बताया सब कुछ लिखोगे आप, right? We started off with basics of power amplifier. वहाँ से आप start करोगे A, B, C and AB. ये चारों amplifiers का मुझे submit करेंगे आप. Okay. So now the problem was the crossover distortion. Crossover distortion क्यों आ रहा था? Because of that voltage. एक voltage जो था वो हमें मिल नहीं पा रहा था. That was input voltage जो हमारा 0.7 से कम होगा, तो उस केस में I was getting some distortion. Okay. So let us see how to overcome that distortion. Okay. So let me draw this circuit here. तो यहाँ पे जो आपको जो स्ट्रक्चर होगा, it will be similar to that of your push pull amplifier. जो push pull amplifier का जो स्ट्रक्चर था वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. अच्छा एक बात बताइए, जो push pull amplifier था उसमें जो हमने ट्रांजिस्टर यूज किया था, was it an NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर? अभी तक जो हमने ड्रॉ किया है. Sir, NPN. Yes, we have used an NPN transistor. So this is not resistance. So this is transistor T1 and this is transistor T2. This is transistor T2. But यहाँ पे जो transistor T2 है, this is a PNP transistor. ये आपको ध्यान देना है. Is that clear? You cannot draw it as an NPN transistor. NPN transistor will draw it, you will not get an output over here. You will not be getting any output over here. Is this clear? So this is the, so इस तरीके से होगा आपका ट्रांजिस्टर, that is PNP transistor. Okay. Obviously biasing resistance चाहिए, that is
this R1 and this is VCC. So this is that biasing voltage, that is VB. Okay, and so this is the input that we are getting. This is VI input. This is capacitor, and this is also VB. Okay, so this is what we have. So let me name this as R2. Everything was same. Okay, this is okay. So what is that I'll be giving over here is I'll be giving an input sinusoidal, यहाँ पर मुझे sinusoidal output मिलना चाहिए. Okay. So now what do you understand from this? इस सर्किट सबको क्या समझ में आ रहा है बताइए? What is that you understand from this circuit? Okay. So let me make it clear. ये जो biasing voltage होगा, this will be 0.7 volts, and even this will be 0.7 volts. So यहाँ पे जो एक point है that is important. These distortions can be reduced by making a small standby current flow off at zero signal condition. Nothing but at zero signal also, when the input is zero, at that condition also this transistor T1 will be forward biased. I think T1 will be ready to conduct as soon as the signal यहाँ पे मिल जाता है. Because यहाँ पर देखिए, if I simply apply a superposition, so the input कितना है यहाँ पे zero है. 0 plus 0.7 कितना हो गया? 0 plus 0.7 volts. So what is the total voltage? The total voltage across this base and emitter will be 0.7. But this T1 will be ready to conduct. T1 will be ready to conduct even if it is 0. जैसे ये 0 से बढ़ने लगेगा, nothing but जैसे ये 0 से बढ़ने लगेगा, what will happen? Accordingly, I can see the changes on the output side. समझ में आ रहा है? So because of this 0.7 only, what is that we have is we have the operating point. We have the operating point above x-axis. आपका जो operating point जो होता है, that will be above x-axis over here. समझ में आ रहा है? So what is this VB? What is the role of this VB? The role of this VB is to overcome crossover distortion. समझ में आ रहा है? What is the role of this VB over here? The role of this VB is to overcome the crossover distortion. Actually, अगर देखा जाए textbook में in some textbooks you will find this as a diode. Actually, अगर diode होता है, actually diode होगा. When the diode is conducting, what happens? I can replace the diode with 0.7 volts, right? So I'm just avoiding that part so that you get some idea कि अगर आप relate कर पाओ कि हाँ 0.7 external voltage supply तरीके दे रहे हैं, because of which this base emitter will be forward biased, because of which transistor T1 is ready to conduct even if the input signal is 0. And as the input signal starts increasing, so what will happen? I can see the corresponding changes on the output side. Is this clear? Similarly, what happens? Similarly, that will happen in the negative half also. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, it is a PNP transistor. It is a PNP transistor, unlike my NPN. Hello. Okay. And coming to the efficiency over here. As I told, that efficiency will be high. Okay. Nobody will find the derivation of this efficiency part, and not at all required also. But one thing should be clear, that इसका जो efficiency होगा, that will be somewhere between 50 and 78.5. 50 to 78.5 जो होता है, इसका efficiency होता है. And to be precise, generally what is seen is efficiency in case of power AB power amplifiers, it is seen roughly around to be 60 to 65%. Okay. जो इसमें efficiency देखी जाती है 60 to 65 या 75 तक, this efficiency is seen. Hello. Is this clear? So this is about the class AB power amplifier, and I want you to write a detailed notes. मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा मेहनत करें, इस पर, because I am not getting anything that is there in the textbook. Because textbook में होगा definitely what is that you will just simply you will see, देखोगे उसको आप छापोगे पेपर में, ठीक है? So before that you will have to do some homework so as to get some material. You need to understand that particular thing, and then you can pen down that on your paper. Hello. Hello. Yes, sir. समझ में आया डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे हम VB ऐड करें, जिसकी वजह से T1 and T2 कंडक्ट करने लग जाएंगे इवन द VT is 0.
किसको हमें ये जो पूरा जो हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, the entire thing that we are doing over here is to overcome this distortion. This is nothing but my crossover distortion. This is nothing but my crossover distortion. Just to overcome this, because मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सिग्नल होगा that is getting disturbed. अगर सिग्नल डिस्टर्ब होगा तो what happens is, so whatever the information that is overlapping on this particular section will be getting lost. So I want that. I don't want that to happen. इसलिए हम क्या करते हैं? We don't want this to happen. So that is the reason we are going for the class AB power amplifiers. Okay. So take it as an assignment and please make sure that you submit it after your Diwali application. Okay. The next is your class C power amplifier. अच्छा एक बात बताइए उससे पहले before starting the class C, आपका AC analysis हो गया क्या, बताओ मुझे सर्किट एनालिसिस में चल रहा है अभी। रेजोनेंस का सेक्शन हो गया आप लोगों का? नो सर। रेजोनेंस का सेक्शन नहीं हुआ है। ओके, लेट मी डू वन थिंग, पहले टॉपिक हो जाने दो एंड देन आई विल एक्सप्लेन, बिकॉज़ उसको एक्सप्लेन करूंगा मेनी थिंग्स दैट आई नीड टू एक्सप्लेन बिफोर दैट क्लास। ठीक है, सो लेट दैट टॉपिक हो जाए आपके क्लास में, उसके बाद में हार्डली 10-15 मिनट्स टेक्स विल दैट पार्ट। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द पावर एम्पलीफायर सेक्शन, क्लास ए बी एंड सी तो हम डिस्कस करेंगे वैसे भी। ओके, सो आई वांट कि आप टेक इट एज एन असाइनमेंट, नोट करके रख लीजिए कि आपको सबमिट करना है। ओके, one more amplifier is to be discussed. No doubt I will be discussing about that amplifier. Okay, once you are done with your AC analysis. Okay. So there is one more important topic. It is not actually a topic. हम already इस topic को जानते हैं. We already know what is this. But in the text syllabus they have given it as a separate topic. What is that they have given here is multi-stage amplifier के नाम पे इन्होंने दे रखा है. The topic that is being given in your syllabus is multi-stage amplifier. So I'll give you an idea about this. What is this multi-stage amplifier? मैं बता सकता हूँ? Multi-stage amplifier. Yes, anyone? What is this multi-stage amplifier? See, multi-stage amplifier नाम पढ़ के बताइए क्या समझ में आ रहा है आपको? See, कभी भी हम ट्रांजिस्टर को देखेंगे, it is not that we have a single transistor. We'll have a single transistor. You have many transistors cascaded. You have many transistors which are cascaded together. अगर छोटा सा मोबाइल चिप भी आप ले लेते हैं, मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर होता है, उस प्रोसेसर को आप देखते हैं, you will have some millions of क्या होता है उसका ट्रांजिस्टर्स अवेलेबल होते हैं। It is not a simple transistor होगा आपके मोबाइल चिप के अंदर, you will be having some millions of transistors, right? Millions of transistors fabricated on that single chip. Okay? And all these transistors will be cascaded. ये सारे जो transistors होते हैं basically cascaded होते हैं, ठीक है? So multi-stage amplifier कुछ भी नहीं है, but suppose this is stage 1 and this is my stage 2 and so on up to some n stage amplifier. कि पूरे n stages, nothing but हर एक amplifier में what is that I have is I have one what is that we have in this? Simply we have BJT. Okay, so input signal दिया जाता है first BJT का, and इसका जो output होगा that will be given as the input to my second BJT. The second BJT है, इसका जो output होगा that will be given as the input to this, and इसका जो output होगा that will be given as the input to my next transistor. Is that clear? So this is what is called as the multi-stage amplifier. This is called as multi-stage amplifier. इस तरीके से nothing but a cascaded structure होता है. It is nothing but a cascaded structure. Okay. For suppose इसका जो amplifier यहाँ पे जो transistor है इसका gain जो है that is A1 and इसका जो gain है that is A2 and इसका जो gain है so on up to AN. So what about the overall gain of the system? इस पूरा जो system है इसका overall gain क्या होगा?
This is input and this is output. So what about the overall gain of this system? Anyone? What about the overall gain? ओवरऑल गेन क्या होगा इस पूरे सिस्टम का? ठीक है, यहाँ पे मैं V1 दे रहा हूँ. V1 is the input that I am giving over here. गेन ये है, तो V0 क्या होगा बताइए? यहाँ से जो आउटपुट आएगा, what will be this V0 will be equal. For suppose gain is A1, V1 is the input. Output voltage क्या होगा बताइए एक बार. मतलब this is the input signal, this is the gain. What about the output? Gain क्या होता है? Gain is nothing but output by input, right? So what about the output? Gain times the input voltage. So that वही तो लिखना है यहाँ पे A1 times V1. Yes? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Okay, ये जो अभी A times V1 जो है, now this is input to my A2. Okay, sorry, this is the input to my transistor T2. And इसका जो gain है, इस सिस्टम का जो gain है that is A2. इसका जो gain है that is A2. तो obviously यहाँ से जो मुझे आउटपुट मिलेगा, यहाँ से जो मुझे आउटपुट मिलेगा, so that will be A2 times the input signal. अभी input क्या है? A1 times V1. So what is that I have over here is, क्या लिख सकता हूँ उसको? A1 into A2 times V1. इस आखिर मान लो कि सिर्फ मेरे पास दो ही स्टेजेस हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो यहाँ पे ओवरऑल गेन कितना हो जाएगा बताओ? V0 by Vin is equal to A1 multiplied by A2. Yes? Hello? मान लो कि दो ही स्टेजेस हैं, अगर दो ही स्टेजेस का अगर मैं गेन निकालता हूँ, अगर दो स्टेजेस का मैं गेन निकालता हूँ, व्हाट इज दैट आई एम गेटिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ दोस टू गेन्स A1 multiplied by A2. उसी तरीके से अगर हमारे पास n स्टेजेस हैं, तो n स्टेजेस हैं, तो व्हाट अबाउट द ओवरऑल गेन क्या होगा? ओवरऑल गेन, व्हाट विल हैपन टू माय ओवरऑल गेन? ओवरऑल गेन क्या होगा? A1 A2 एंड सो ऑन अप टू An. इन सबका प्रोडक्ट ही होगा. यस? हेलो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So this is what a multi-stage amplifier is. This is a rough idea about a multi-stage amplifier. You have n number of stages. N number of stages का मतलब ये एक का जो output है that is given as the input to the next stage and so on. So this kind of structure is nothing but a cascaded structure. Okay. So अगर हम multi-stage amplifier की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हम डिसाइड करेंगे the coupling technique that we are using. Coupling technique in a sense, यहाँ पे आप देखिए, this is the output of transistor 1 and this is the input to my transistor 2. So when I say a coupling का मतलब क्या है? यहाँ पे what is the element that I will be adding in between this stage 1 and stage 2 such that the output of this stage 1 is coupled to the input of my stage 2. इन दोनों के बीच में I will be using a coupling circuit. I will be using a coupling circuit. Right? So depending upon this, based on this coupling circuit, this multi-stage amplifiers को कितने तरीके से हम differentiate कर सकते हैं? So the first technique that I have here is called as the RC coupling. It's called as the RC coupling. We already know this. हमने already जानते हैं, but यहाँ पे नाम दे रखा है RC coupling. I'll tell you what is RC coupling. And next one is the transformer coupling. I hope आप लोगों को पता है कि transformer coupling क्या होता है. हेलो, यस, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के बारे में आप लोगों को आइडिया है? जब मैंने पुश पुल एम्पलीफायर डिस्कस किया था, एट दैट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर कपलिंग. यस, इंस्टेड ऑफ आरसी की जगह में हम क्या कनेक्ट करते हैं? वी कनेक्ट अ ट्रांसफॉर्मर देयर, एंड ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट सेकेंडरी टर्मिनल्स का जो आउटपुट होगा दैट विल बी गिवन एज अ इनपुट टू द नेक्स्ट ट्रांजिस्टर. बताया था नहीं मैंने? हेलो, Yes, sir. okay, so that is about the transformer coupling. And third one is direct coupling. Third one क्या होता है? Direct coupling. Nothing but कोई भी element यहाँ पे कनेक्ट करना, simply मैंने आउटपुट से एक वायर लिया, nothing but ये आउटपुट है, यहाँ से एक वायर लिया, डायरेक्टली मैंने इसके इनपुट पे कनेक्ट कर दिया. So that is nothing but called as the direct coupling. सबसे easy क्या होता है? Direct coupling. I need not use any component over there. ठीक है? RC coupling में क्या करते हैं? Instead of connecting it directly, what is that I have here is I use a capacitor. RC हम किसको क्यों कर रहे हैं? Because we have some resistive components as well as the capacitive component. So the combination of these two.
So the combination of these two. So what are the types of components that are present over here? Resistive component भी है, capacitive component भी. इसलिए इसको क्या करते हैं? Capacitive coupling. Or else simply I would say a capacitor coupling. And we need a capacitor so as to couple the output of stage 1 to the input of stage 2. Is that clear? So that is nothing but the RC coupling. Direct coupling में क्या होता है? Directly हम connect कर देते हैं. And transformer coupling में हम क्या करते हैं? Transformer coupling में हम क्या करते हैं? You might have seen. So this is what we have. Okay, this is stage 1. Stage 1 का जो output है, this is the output. And ये मेरा दूसरा transistor है. This is my next. This is my next transistor. यहाँ पे resistor भी है, balancing resistance. So this is VCC. This is VCC. Okay. यहाँ पे आप देखिए कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसको. मैंने इनपुट दिया है, यहाँ से इनपुट ट्रांसफर होगा, इसके अक्रॉस में आउटपुट कनेक्ट कर रहे हैं. So this kind of configuration is called as the transformer coupling. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे to couple क्या हम यूज कर रहे हैं? One stage to another we are using a transformer over here. We are using a transformer over here. ठीक है? आप आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट करो या तो आप एक और स्टेज को देना चाहते हो accordingly if you can want to do it you can do it accordingly. Direct coupling में क्या होता है? Directly हमने यहाँ से आउटपुट टर्मिनल से लिया and we are directly connecting it to the input of the next stage. RC coupling में what is that? We have this जो कैपेसिटर कनेक्ट करते हुए आगे अब तक that is nothing but the RC. Because of the components, resistance and capacitance that we have in the circuit, we call it as a RC coupling circuit. Is that clear? समझ में आया नहीं बताओ मुझे एक बार. Yes, sir. Okay. Multi-stage amplifier अगर छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है for suppose 2 marks के लिए ये अच्छा ठीक है. This is stage 1 इसका amplification factor जो है this is A1 इसका amplification factor A2 है ऐसे ऐसे n stages है. So what is the overall amplification factor? Direct answer should be it is product of all the amplification factors. So that is the first stage. And that is the first thing that you need to remember for your multi-stage amplifiers. Okay. Now the next question is what is the coupling element that I am using between this stage 1 and stage 2? हमने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि मैं स्टेज 1 को स्टेज 2 से कनेक्ट कर रहा हूं. बट इन बिटवीन दैट व्हाट इज दैट आई एम यूजिंग एज अ कपलिंग एलिमेंट दैट विल डिसाइड वो डिसाइड करेगा कि कौन सा टाइप ऑफ कपलिंग एलिमेंट. ठीक है. यहाँ पे जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं फॉर सपोज इफ आई एम यूजिंग द एलिमेंट एज कैपेसिटर दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ आरसी कपलिंग. अगर यहाँ पे मैं ट्रांजिस्टर कनेक्ट सॉरी इफ आई कनेक्ट अ ट्रांसफार्मर ओवर हियर सो दैट इज नथिंग बट ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर. अगर मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूं जैसे मैंने यहां पे कनेक्ट किया आउटपुट को लेकर डायरेक्टली इनपुट पे दे दिया सो दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट कपल्ड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर. इज दैट क्लियर? हेलो. Yes, sir. Okay, so that was about the multi-stage amplifiers. Though they have given it as a separate line, it is not that much big topic. बस इतना आपको पता होना चाहिए. And figures को मैंने completely draw नहीं किया because we have been drawing this kind of circuits. बहुत सारे draw किया अभी तक हमने. ट्रांसफार्मर कपल के लिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ किया सो दैट यू मे नॉट गेट कंफ्यूजन कि जो आउटपुट टर्मिनल से कहाँ पे कनेक्ट किए जाते हैं. यहाँ आप ध्यान देखिए एक टर्मिनल जा रहा है बेस पे एक टर्मिनल जा रहा है बिटवीन दिस रेजिस्टेंस R1 एंड R2. बस ये आपको पता होना चाहिए कनेक्शन कैसा है बिकॉज़ वी हैव टू टर्मिनल्स. Now we have a confusion where to connect these two terminals. One terminal will go to the base and other terminal will go to will be connected in between R1 and R2. So that is what you should know. So that was about the transformer couple and direct couple में directly be connected. वहाँ पे डायरेक्ट कपल और आरसी कपलिंग में यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर नहीं होता, वहाँ पे आरसी होता है. आरसी के नीचे से जो टर्मिनल होता है दैट इज कॉल्ड एज द आउटपुट टर्मिनल एंड यू नो दैट वेरी वेल एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ओके एंड सो टेक डाउन दैट एज एन असाइनमेंट. एक असाइनमेंट की तरह ले लो पावर एम्पलीफायर्स को. I did not discuss this classic power amplifier because time बहुत चीजें इसमें डिस्कस कर ली थी. We needed lot of prerequisites to understand that particular section. I'll see to it if I can explain that in tomorrow's class. कहाँ तक हो गया आपका AC amplifier सॉरी AC एनालिसिस वैसे सर्किट में? रेजोनेंस नहीं पढ़ा है आप लोगों ने तो क्या क्या पढ़ा बता सकते हैं एक बार आप AC में? सर मैक्सिमम पावर चल रहा है. मैक्सिमम पावर चल रहा है.